have a question for you. So when we talk about being strong, right? For men especially, men are expected to be strong at all the times, right? They cannot cry. They cannot, lean on a friend's shoulder when they're facing the darkest of times. And a man is expected to be ready all the time for trouble and never drop a sweat of labor or a tear from his fears. So, what are your thoughts around on the boys don't cry stereotype sort of a thing? What are your thoughts around it? I think that's most detrimental thing that you can do to a man, because you're telling a person, you're telling a human being to not show an emotion, and to hide emotions and to suppress emotion. And obviously, when you do something which is not natural, it will burst out someday. So men are, I think we can agree, men are inherently physically strong. That's the way we're born. मतलब अगर आप generally overall देखें वो strong हैं physically, but when you talk about uh, but that's a biological difference. उसका वो तो एक है. But men and women both carry emotions. So आप दोनों को, इसके अलावा मुझे कोई डिफरेंस नहीं है. तो आप, मैं अगर औरतों को, आप एक तो औरतों को नहीं ये बोलना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और मर्दों को ये नहीं बोलना चाहिए यार आप इमोशनल नहीं हो सकते. दोनों इमोशंस कैरी करते हैं, दोनों की मर्जी है, वो चाहे हंसें, चाहे रोएं, चाहे गुस्सा हो, चाहे डिप्रेस हों. दैट्स द सेल्फ. हाँ, डिग्री वेरी कर सकती है ह्यूमंस में, सबका जेनेटिक कोड डिफरेंट होता है, बट दिस इज एन इमोशन. आई कैन, इफ आई फील बैड अबाउट समथिंग, इफ आई वांट टू क्राई, आई शुड बी एबल टू. ऐसा ना हो कि मैं अंदर ही दबा के रखूँ कभी और बात करने से भी डरूँ. यार अगर मैं दोस्तों में ऐसी बात कर दी तो मेरा मजाक उड़ेगा, या मैंने अपनी फैमिली के सामने ऐसे बोल दिया तो वो मुझे सुनाएंगे, या मैं अपनी वाइफ के सामने जाके बोल दूँ तो क्या सोचेगी यार, कैसा लूसी बंदा है. द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मैन who show emotions. And it's just like if you stop water from bursting out of a pipe by a thin piece of plastic, let's say, it will hold for some time, but eventually water will find its way, and it will burst. And that's what happens with men. And it has happened with me as well in the past. So if you feeling bad about something, if you want to share that feeling with someone, but you can't because you're like, okay, I can't because this is something which is not manly. And then one day, you just burst out. You're like, this is something that is bothering me, and I can't share it with anyone. Maybe it's in certain cases you can share with a female friend of yours, because probably they can relate more. अच्छा यार, you can be emotional, but men ही I think ये push कर रहे होते हैं notion के, नहीं आप दो सभी कर रहे होते हैं, but men I think ज़्यादा ये inculcate करते हैं, नहीं यार तू लड़का है, तू ये इस तरह नहीं सोच, मर्द बनो, मर्द बनो. तो ये हमें आपस में आई थिंक सबसे पहले सॉर्ट करना चाहिए कि मर्द बनने का मतलब ये नहीं है कि पहले तो मुझे नोशन नहीं समझ आता मर्द बनने का क्या मतलब है. इंसान हूँ, मर्द हूँ, मतलब वही है जो मतलब क्या करूँ, मर्द बनूँ तो क्या करूँ, ना रहूँ. आई डोंट थिंक दैट्स फीजिबल एंड दैट्स ह्यूमन. यस, इफ़ यू थिंक कि मर्द बनो का मतलब ये है कि अच्छा यार जस्ट be active, be supportive of your family, of yourself. Yes, that's fine. But I can still show emotions and be supportive. I don't have to be. I've seen men who don't even cry at someone's funeral, and not someone's funeral, but like their relatives' funeral, because they're like, yeah, I don't know, like it's just we are attuned this way. कि यार मुझे अभी रोना नहीं आ रहा. Like if I can't cry in front of people, I'll cry बाद में. Like I know I'll cry, but बाद में, अभी मैं सबके सामने नहीं रो सकता. क्या बोलेंगे यार लोग. ये भी मैंने देखा है. एंड रिगार्ड, मैं जेंडर डिबेट में ज़्यादा पढ़ता नहीं, बिकॉज आई बिलीव सब एक जो कल्चरल आपका नॉर्म बना होता है वो सभी सपोर्ट कर रहे होते हैं तभी बना होता है. तो अगर आप मर्द बनो की बात करें, सही है, मर्द भी कर रहे होते हैं, बट सभी कर रहे होते हैं, सभी बोल रहे होते हैं ना मर्द बनो, मर्द बनो. सो that's very detrimental for mental health. And men go through similar emotions as people of any other gender. If there's no outlet, it affects mental health and eventually causes जब आपको आउटलेट ही मिल रहा होता तो आप वायलेंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज एग्जिबिट करते हो डिफरेंट वे में. आपको खुद नहीं पता होता, बट वो एक चीज़ आपके दिमाग में बैठी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप इस तरह एग्जिबिट करते हैं. तो मैन आर कंसिडर्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ द फैमिली, बट मैन वो
प्रोटेक्ट करते ही उतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज में पड़ जाते हैं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, ये चीज़ें चाहिए, घर में ये चाहिए, ये इशू आ गया, ये आ गया, और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। वो बॉयज़ के साथ शायद शेयर कर लें, बट वो अगर उनका ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है तो दे वोंट ट्राई, दे वोंट शो देयर ग्रीफ, डिप्रेशन, सैडनेस, बिकॉज लोग क्या कहेंगे। सो मैं तो एज अ मैन, आई थिंक आई, जब से मैंने अपने इमोशंस क्लियरली शो करना किए हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। लाइक अगर है तो है, लाइक इफ आई नीड हेल्प, इफ आई नीड सपोर्ट, इसमें गलत बात क्या है यार? अच्छा है वो चीज़ क्लियर हो जाए, मैं किसी से बात कर लूँ, सो दैट यू नो देयर इज सपोर्ट. So I would suggest people, men, to be open about their feelings. If you cry, you're not doing anything unnatural. It's you crying, that means you're human. ठीक है? Yes, that's another debate कि यार strong होना चाहिए, emotionally strong होना चाहिए, emotional intelligence होनी चाहिए. That's another debate. But if you've reached a breaking point, if you want to cry, if you want to share your emotions, then that's fine. At the same time, you shouldn't tell women कि यार नहीं, women are emotional. No, women are not always emotional. I've seen women who hardly cry. Like they take care of, they're sole breadwinners of the family. They take care of the household. They face so many issues. They raise their children alone. I don't see them crying. मतलब औरतें तो इमोशनल होती हैं ना, तो वो क्यों नहीं रो रही? Because they're emotionally intelligent. Some people are very intelligent, some people are not intelligent. Regardless of the gender, just who is not that intelligent, let's just help the person be more intelligent ताकि वो उस breaking point पे ना आए. That's the end of it. ना मर्द ना औरत की debate. I think that's the crux of it. Some people are emotionally intelligent, some people are not that intelligent, and you can just help them, you know, how to cope with things, how to handle stress, how to handle things, you know, so that, you know, तो ये मर्द औरत वाली डिबेट वहीं पे खत्म